बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट 18 मॉडर्न फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे डिस्कस करेंगे उसके लॉस। अब देखिए बच्चे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होता क्या है। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, अब हमें ये पता है कि ब्लैक बॉडी जो होती है ये एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ क्या होती है, हीट होती है। हम इसको बच्चे इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशन falling on it is called black body. When this body is heated to a high temperature, the body emits all the electromagnetic radiation called black body radiation. अब अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में हमें एक कैविटी दिखाई गई है। अब यहाँ पे इस कैविटी के बाहर जितना भी हिस्सा है वो क्या है, वो ब्लैक है। अब अगर हम इसमें कोई रेडिएशन एंटर करें तो आप देख रहे हैं कि जितना रेडिएशन जितना हमने एंटर किया है तमाम का तमाम वो इस ओपनिंग ओ से बाहर निकलेगा। सो लेट अस कंसिडर अ बॉडी इन द पाम ऑफ कैविटी। कैविटी का मतलब ये होता है कि अंदर से क्या है, हॉलो है, हैविंग अ नैरो ओपनिंग ओ। अब बच्चे, the body is completely black except the opening O. So when radiation falling on the opening O enter the cavity, the wall of the cavity constantly absorbs and emit electromagnetic radiation. At thermal equilibrium, the whole cavity is filled with electromagnetic radiation. When the cavity is heated, these radiations are bounced back and forth many times and finally emit to the opening. Such a body is called black body radiation, या इसको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन, या इसको हम कहते हैं बच्चे फुल वेव रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे लॉज हैं, इसमें हमारे बुक्स में बहुत से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल है, तो इसको समझना ज़रूरी है। अब देखिए बच्चे, जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकल रहे थे तो इसको मुख्तलिफ साइंसदानों ने विजुअलाइज किया, देखा, और फिर उन्होंने अपने स्टडी के मुताबिक उसको अपने नाम दिए। तो सबसे पहला जो लॉ है वो ब्लैक बॉडी के बारे में पेश किया है किसने, वीन्स ने। और देखिए बच्चे, वीन्स कह रहा है दिस लॉ स्टेट दैट द वेवलेंथ ऑफ radiation is inversely proportional to the absolute temperature. Mathematically, we have lambda शो करता है वेवलेंथ को, T है टेम्परेचर, सो lambda is inversely proportional to the absolute temperature. यहाँ पे lambda is equal to constant 1/T, अगर हम क्रॉस करें तो lambda T is equal to constant. On the basis of this law, Wien was successful to explain the distributions of black body radiation for shorter wavelength. Only the curve obtained by Wiens was fit with the experimental curve for shorter wavelength only, but it was fit for longer, but it was not fit for what, longer wavelength. अब इसके बाद एक और सेंटेंस आया, उसका नाम था रेले जीन्स लॉ। अब रेले जीन ने taught that the black body emit thermal radiation which are reflected back and forth by the walls of the black body to form a systems of standing waves. और हमें पता है कि what is standing waves? Standing waves are those waves in which the particle of the medium
vibrate perpendicularly, they have the same magnitude in opposite direction. So they make a system of standing waves just like transverse stationary waves in a stress string. And transverse waves are those waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the propagation of waves. On the basis of this law, they developed the following formula for energy distribution of Blake body. अब इन्होंने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस किया E lambda 8 pi kt डिवाइड बाई lambda 4. अब अगर हम ग्राफ को देखें वीन्स ग्राफ को, तो ये हमारे पास टेम्परेचर है एक्सिस पे, वाई पे हमारे पास वेवलेंथ है. तो ये तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सही था, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ये ला क्या था गलत. बट दिस ला इज आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बिकॉज द कर्व obtained by them was fit with experimental curve for longer wavelength. It was not fit for shorter wavelength. इसके बाद एक और साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बच्चे डिस्कस किया, उसका नाम था स्टेफन बोल्ट्जमैन्स लॉ. अब स्टेफन ने कहा कि जब ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलेंगी तो उसकी जो एनर्जी होगी दे आर द 4 टाइम ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो इन्होंने इसको स्टेटमेंट का नाम दिया. दिस लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ रेडिएटेड per second per unit area of a black body is directly proportional to the 4th power of absolute temperature. So mathematically हम बच्चे कह सकते हैं कि E is proportional to T की power 4. So E is equal to constant T की power 4. अब यहाँ पे जो constant है इसको हम नाम देते हैं सिग्मा, और इसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेफेन्स कॉन्स्टेंट्स. इसके बाद है 4. अब एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मैक्स प्लैंक. 1900 में इन्होंने ब्लैक बॉडी के बारे में कहा कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलते हैं दे आर नॉट इन द कंटिन्यूस फॉर्म बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. तो अब उन्होंने जब ग्राफ ड्रा किया तो इसके ग्राफ के मुताबिक ये फिट था फॉर बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ. तो इसी वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज़ गेट किया, एंड दैट इज़ द बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. तो बच्चे सुने, in 1900 Planck introduced his quantum theory for removing the deficiencies of Wien's and Rayleigh genes. The curve obtained by Planck was fit with experimental curve for both shorter wavelength as well as for longer wavelength. For this huge success, he was awarded with a Nobel Prize in 1918. So according to Planck's quantum theory, the black body radiation are not coming out of the black body cavity continuously. So these radiations come out of the cavity in the form of packet or bundle of energy which are known as photon. Photon क्या होते हैं बच्चे? They are packet of energy, या इसको हम क्वांटा कहते हैं. So the rest mass of photon is 0. Its energy is equal to hf and its momentum is equal to lambda by 4. अब importance इसकी क्या थी? The Planck quantum theory has played an important role in the birth of modern physics. So with the help of this theory, we can explain certain important phenomena like photoelectric effect, Compton effect, and various laws have been derived on the basis of this theory. So thank you, students.